Okay, good evening, everyone, to all those who have joined us today for the session on chemistry. And this session is basically the Ask Me Anything session. And दो तीन चीजें मैं बताना चाहूंगा before starting the session, before taking the questions for today's session. So I hope that आप सबकी preparation is going on the very top of the pace, and you all are utilizing most of the resources whatever this platform Sathi is providing. A very good array of resources are available, including the recorded sessions as well as these Ask Me Anything sessions, doubts sessions, as well as the written material, the study material which is there on the website regarding that. Please utilize all these materials, and I hope that we can make a difference in your preparation and you can achieve a very good rank. Now, regarding chemistry, आज का ये जो session है, the Ask Me Anything session, this is basically regarding any doubt that you have in the class 11th and 12th chemistry, as well as जो इसके बाहर से आता है आपके नीट एग्जाम्स के लिए जो आपकी प्रिपरेशन होती है उसमें जो आपके टॉपिक्स होते हैं, सो रिगार्डिंग द 11th एंड क्लास 12th syllabus आप इससे कोई डाउट पूछ सकते हैं. So myself, Nishat Biranjan, I am currently a final semester, as a matter of fact, student, MBBS student in AIIMS Nagpur, and I cleared my NEET exam in 2020. Right. So let us start today's session. Now, before starting the session, a couple of go aheads. कि आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर एक्स्ट्रा डाउट आता है या फिर if you're not satisfied with the explanation, you can let me know via the YouTube comment section as well as by letting the Sati team know. So they'll direct forward the message to me and I can solve the doubts. And if you want any other question to be answered, please let me know via the comment section and that also can be arranged, right? Okay. So starting with the first reaction. So the first reaction, basically, the note which was given was explain coupling reaction of phenols. Okay. So first of all, we are talking about phenols. Now, coupling reaction, you have to know the English behind it. Coupling means okay. This means it is an addition reaction. That means कोई ना कोई चीज ऐड होके कुछ एक नया प्रोडक्ट बनेगा, राइट? सो दैट मच वी नो बिफोर इवन नोइंग या फिर बिफोर इवन स्टार्टिंग कि टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है इस क्वेश्चन का. सो व्हाट आर एक्चुअली कपलिंग रिएक्शंस? लेट अस सी. Coupling reactions involve the reaction between a diazonium salt. तो एक diazonium salt होगा. एंड एज आई सेड कि कपलिंग मीन्स एडिशन रिएक्शन, तो और एक कंपाउंड होना चाहिए जिसके साथ मिलके एक नया कंपाउंड मिलेगा. सो एक डायजोनियम सॉल्ट होगा एंड देयर विल बी एन एरोमेटिक कंपाउंड, मोस्टली फिनॉल. क्योंकि ये क्वेश्चन में हम फिनॉल की स्पेसिफिकली बात करेंगे, सो दैट इज व्हाई द एरोमेटिक कंपाउंड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी फिनॉल, राइट? तो एक डायजोनियम सॉल्ट रिएक्ट करता है एक एरोमेटिक कंपाउंड, इन दिस केस लाइक अ, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ माइल्ड बेस. तो ये हमें पता है कि माइल्ड बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन है, मतलब एल्कलाइन मीडियम के अंदर रिएक्शन है. सो इन द प्रेजेंस ऑफ माइल्ड बेस, फिनॉल विल रिएक्ट विद द बेंजीन डायोजिनियम क्लोराइड टू फॉर्म एन एजो कंपाउंड, राइट? सो जो हम कह रहे थे कि रिएक्टेंट प्लस रिएक्टेंट गिव्स एडिशन प्रोडक्ट, इस कंडीशन में हमारा प्रोडक्ट है एन एजो कंपाउंड, राइट? एंड और एक चीज, this reaction will typically occur under alkaline conditions and the product is a colored azodine. Okay, so as the reaction was taking place in presence of a mild base से हमें ये समझ आ गया था कि ये alkaline conditions है. Okay, and जो हमारा product था, the product was a colored azodine. So if you want to represent this reaction, how will you represent this reaction chemically? So that is done basically by C6H5OH. So ये जो पर्टिकुलर आपका कंपाउंड है C6H5OH, that is your phenol. This phenol reacts with this particular compound. Now what you see here is benzene diazoride. You can make the diagram here. ये हमने बना लिया बेंजीन एंड इसके साथ अटैच है N2 प्लस
Cl minus. So this is a benzene diazonium chloride. Okay, I'll write here also benzene diazonium chloride. So phenol reacts with benzene diazonium chloride, and in the presence of NaOH. NaOH means alkaline condition. What you are getting is C6H5N double bond N, single bond C6H4OH. So this particular compound जो आपको इधर मिल रहा है, that is an azo compound. Means it is a colored azo dye. डबल, ये हमारा सेंट्रल नाइट्रोजन हो गया, एक तरफ से अटैच्ड है C6H5N double bond, and the single bond is attached with C6H4OH, right? एंड जो बाय प्रोडक्ट इस रिएक्शन का निकलता है दैट इज HCl. ओके, सो दिस वाज द कपलिंग रिएक्शन ऑफ फिनॉल. नाउ एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम इसमें देखेंगे फॉर दिस वेरी स्पेसिफिक रिएक्शन, एंड एक्स्ट्रा एच पॉइंट. जो हमारा फिनॉल है, राइट, इन द रिएक्शन वी टॉक्ड अबाउट फिनॉल. सो दिस फिनॉल विल कपल एट द पैरा पोजिशन रिलेटिव टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप. जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, ये था हमारा फिनॉल, दिस इज बेंजीन एंड दिस इज OH. तो इसकी जो पैरा पोजीशन रहेगी, उस पैरा पोजीशन पे हमारा फिनॉल जो है वो आके कपल करेगा, राइट? ओके, so I hope this first question is clear. Now let us move on to the next question. All right, okay. Now the second question that was asked is, what do you mean by electronegativity? Okay, so this particular question is like very vague in terms of हम इसे, I can explain this for even 1 hour, for one whole day, or I can finish it in 1 minute also. So let's talk in general regarding some general aspects about electronegativity. तो एक अगर हम एटम की बात करें, so electronegativity is defined as the tendency of an atom to attract a bonding pair of electrons. ठीक है, क्या टेंडेंसी है उस एटम की कि वो एक बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करे टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड. एक कोवेलेंट बॉन्ड से एक एटम जुड़ा हुआ है, उस कोवेलेंट बॉन्ड को बनाने वाले एक बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करे. जो उस एटम की इस तरह की टेंडेंसी होगी, दैट पर्टिकुलर टेंडेंसी इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट एटम. अंडरस्टूड? ओके, नाउ बात करते हैं इसके डायमेंशंस की. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज बेसिकली ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, एंड ये वेरी करेगी डिपेंडिंग ऑन द एटम्स एनवायरनमेंट. उसके सराउंडिंग में आयंस हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, किस तरह के आयंस एटम्स मॉलिक्यूल्स है, वेदर देर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है. ठीक है, सो दैट इज द केस कि डायमेंशनलेस है, एंड वो डिपेंड करती है ऑन द एटम्स एनवायरनमेंट. ऑल्सो इट विल डिपेंड कि वो जो एटम का एनवायरनमेंट है उसमें आपका alkaline conditions हैं, acidic conditions हैं, because we know in acidic conditions there are free H plus ions present, right? So that will alter the electronegativity. Now going on to the next part, कि what will we do by measuring electronegativity, and how will we measure, कि हम मापेंगे कैसे कि कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है. कि साहब आपने ये तो कह दिया कि चलिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट कितना, एटम ए के कंपैरिजन में एटम बी कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है. सो दैट मेजरमेंट इज बेसिकली डन बाय पॉलिंग स्केल, राइट? सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हम 4-5 कीवर्ड्स देख लेंगे. टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन कोवेलेंट बॉन्ड. डायमेंशनलेस होती है, एटम के एनवायरनमेंट पर इसकी इंटेंसिटी वेरी करेगी. मेजर कैसे करेंगे हम? पॉलिंग स्केल से. Okay? चलिए, दिस वाज अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. नेक्स्ट इसी से हमारा रिलेटेड था जो थर्ड क्वेश्चन. The third question which was asked was, what is the bonding effect of electronegativity? So अगर हम बात करते हैं कि कौन से तरह के बॉन्ड्स बनते हैं बिटवीन वेरियस एटम्स,
सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक बहुत ही क्लासिकल या फिर आई मस्ट से बहुत ही यूनिक इफेक्ट होता है ऑन द टाइप एज वेल एज स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स विच आर फॉर्म बिटवीन दिस एटम्स। कौन से तरह के आपके बॉन्ड्स बने हैं, कितनी उनकी स्ट्रेंथ है, दो थिंग्स, राइट? ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिफाइन जो किया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, दैट वाज यूजिंग द covalent bonds, right? So now we'll talk about the polar covalent bonds in which there is a particular direction. Okay, so polar covalent bonds, when two atoms with different electronegativities form a bond, the bonding electrons are drawn more towards the more electronegative atom, creating a dipole moment. तो हमने दो एटम्स लिए, उनकी पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करी, वो डिफरेंट है। तो जब इन दोनों एटम्स ने एक बॉन्ड बनाया, तब ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स थे, दीज आर ड्रॉन मोर टुवर्ड्स दी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी उसके तरफ ड्रॉ हो गए। इसी वजह से हमारा बना एक डायपोल मोमेंट। सपोज इसी को हम अगर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें, दिस इज एटम ए, इसने बॉन्ड बनाया कोवेलेंट विथ एटम बी। दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, मान लिया कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट बी एटम जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है? इफ दिस इज 1 देन दिस इज 3। तो इसने अपने तरफ ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे इनको अपने तरफ खींचा। तो अब क्या हुआ, इस बॉन्ड जो था, ये जो ए बॉन्ड बी, ये वाला बॉन्ड था, इसमें एक डायपोल मोमेंट क्रिएट हो गया इन दिस, फ्रॉम ए टू। सो ये रहा इसका डायपोल मोमेंट इन अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अंडरस्टूड? ओके, चलिए दूसरा देखते हैं केस। तो पहला वाला जो बॉन्ड था दैट वाज इटसेल्फ एन आयनिक कोवेलेंट बॉन्ड, और उसके अंदर पोलर उसका नेचर था। सेकंड जो केस है, सेकंड केस में भी इटसेल्फ हैव अ आयनिक बॉन्ड, मतलब पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज नेगेटिव चार्ज, दोनों टाइप चार्ज हमारे पास ऑलरेडी हैं। सो if the difference in electronegativity between two atoms is large, the bond tends to be ion, with one atom completely transferring an electron to the other. मतलब है इसका, सपोज ये जो हमने दो एटम्स लिए थे ए एंड बी, अब इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमने देखा कि 1 और 3 का हमने डिफरेंस रखा, बट सपोज कीजिए इफ द डिफरेंस जो इनके बीच का डिफरेंस है वो 1 और 5 के आसपास है, तो काफी ग्रेटर डिफरेंस हो गया ये। तो इस तरह का अगर डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तब क्या होता है, जो बॉन्ड है वो हमारा आयनिक बन जाएगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर पहले एक ट्रांसफर हो रहा टू वन डायरेक्शन, अब वो उसमें से जो एक इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे एटम के पास पूरी तरह से चला जाएगा। मतलब एक पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज जो आपका डोनर है, एंड जो रेसिपिएंट है उस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एडिशनल इलेक्ट्रॉन आ गया उसके पास, उसकी जो इलेक्ट्रिक चार्ज, उसका इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी थी, दैट गॉट डिस्टर्ब्ड, right? So this is regarding the ionic bonds. Let's talk about the third case. Now in the third case, we are having the bond strength. पहले हमने बात करी कोवेलेंट बॉन्ड्स की, फिर हमने बात करी आयनिक बॉन्ड्स की। नाउ वी विल टॉक अबाउट बॉन्ड स्ट्रेंथ। जनरली जितना ज्यादा डिफरेंस होगा इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उतना ज्यादा एक बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होगा, राइट? मीन्स ग्रेटर द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड, दैट इज इन जनरल। अब जैसे कि आप अगर कह सकते हैं इन फर्स्ट एंड सेकंड केस, सो जो आयनिक बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा था, इसलिए जो आयनिक बॉन्ड बना था वो काफी स्ट्रांग बना था। वेराज वही हम दूसरा केस अगर ले लें जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पॉलिंग स्केल पे हमने जो मेजर करी थी, दैट केम आउट टू बी लेस, तो उसकी जो स्ट्रेंथ होगी इन दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, उस बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी दैट विल बी कंपेरेटिवली लेसर। ओके, चलिए, so this was regarding electronegativity as well as the bonding effect of electronegativity.
Okay, चलिए, let us move on to the next question. So the next question says, what are the trends in periodic table of, excuse me, yeah. So what are the trends of electronegativity in periodic table, right? Okay. So as we all know, periodic table में होते हैं एक periods और एक groups. The horizontal rows are known as periods and the vertical columns are known as groups. So first हम देखेंगे across a period. Then we'll see down a group, right? So across a period, electronegativity will increase from left to right due to the increasing nuclear charge and decreasing atomic radius. जैसे जैसे अक्रॉस अ पीरियड हम जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमें ऑलरेडी पता है। वो क्या है कि जैसे जैसे हम जाते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाता है एंड एटॉमिक रेडियस जो है एटम का वो डिक्रीज होते जाता है। अब अगर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है, थोड़ा श्रिंक हो रहा है एटम का साइज, तो और चार्ज भी बढ़ रहा है, मीन्स अट्रैक्शन ज्यादा होगा, न्यूक्लियस ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करके रखेगा। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज करेगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अंडरस्टूड? एंड व्हाट वर द रीजंस? इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज एंड decreasing atomic radius. Okay, done. So this got explained. Let us talk about the second thing, that is down the group. So down the group, as we know कि जो एटम का रेडियस है उसी सेम ग्रुप के जो एटम्स हैं उनका रेडियस डाउन द ग्रुप इट गोज ऑन इंक्रीजिंग। एंड जो इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट है वो भी हमारा बढ़ते जाता है। सो बिकॉज ऑफ दिस कि एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, एज वेल इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, इससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप विल डिक्रीज क्योंकि वो कम फोर्स से अट्रैक्ट कर पाएगा। ओके, so this is the concept behind the trend which is shown in electronegativity in the periodic table, right? Okay. So these two three questions which were there, the second, third, and fourth questions, those are mainly related to electronegativity. सबसे पहले हमने देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है। फिर हमने देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स इससे इफेक्ट करते हैं, जो टाइप ऑफ बॉन्ड है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड है, रिगार्डिंग दोज। फिर हमने देखा कि एक पीरियोडिक टेबल में व्हाट आर द ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाउ कमिंग ऑन टू अ टोटली डिफरेंट concept, that is what are mixtures. Okay, let us talk about mixtures and we'll even give an example for this. Okay, chaliye. So a mixture is a combination of two or more substances where each substance retains its chemical identity and properties. Mixtures can be homogeneous or heterogeneous. बेसिकली व्हाट इज द स्टेट कि एक कॉम्बिनेशन है कितने, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का, जहां पे अब दिस इज द मेन लाइन, फोकस ऑन दिस, ईच सब्सटेंस रिटेन्स इट्स केमिकल आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टीज। उसकी जो केमिकल आइडेंटिटी है, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिटेन करके रखेगा। देयर विल बी नो चेंज या फिर देयर विल बी नो लॉस इन देम। नाउ मिक्सचर्स कैन बी homogeneous as well as heterogeneous. What is the meaning of homogeneous mixture? Let's see. सो होमोजेनस मिक्सचर इज नथिंग बट जिसमें जो सब्सटेंसेस हैं, जो कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन से वो मिक्सचर बन रहा है, दोज आर हैविंग ए यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, राइट? एग्जाम्पल सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर मीन्स यू मिक्स NaCl विथ वाटर H2O। जो सॉल्ट वाटर बनता है इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर। आप कोई भी एक पार्ट ले लेंगे उस
particular in that particular sample, you'll be getting the uniform composition of NaCl with H2O. Same goes with now heterogeneous compounds, but only difference is it is a non-uniform composition. फॉर एग्जाम्पल आप ले लें सैंड इन वाटर. अगर आप रेत को पानी में डालते हैं तो इफ यू टेक उस पूरे कंटेनर में से आप हर जगह से अगर देखेंगे तो आपको अलग अलग क्वांटिटीज ऑफ सैंड मिलेंगे डिपेंडिंग अपॉन कितना उसका डिजॉल्वेबिलिटी है, कितना वो नीचे बैठा है या फिर कितना उसको एजिटेट किया है. सो दैट इज ए heterogeneous mixture which has a non-uniform composition. Okay, right. So this was regarding a homogeneous mixture as well as heterogeneous mixture. Now, what are the examples of mixtures? That was the next question. It was included in the previous question. Still, let us talk some more examples. Okay, the homogeneous mixture का और एक example लेते हैं. The best example that we have is that air. जो हमारे surrounding में air है, it is nothing but a mixture of gases. ठीक है. Various जो gases हैं, nitrogen, oxygen, carbon dioxide, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये गैसेस जो हैं एयर में प्रेजेंट हैं, उनके पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन है. बट आप कोई भी पार्ट ऑफ एयर ऐसे इन जनरल अगर उठाते हैं तो इट विल बी हैविंग ए होमोजेनस यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन ऑफ ऑल द गैसेस प्रेजेंट. देन नेक्स्ट हमारा होता है शुगर डिजॉल्व्ड इन वाटर. जो आप चीनी है पानी में घोल के मिलाते हैं, सो जब वो पूरा मिक्स हो जाता है, दैट टाइम यू विल बी गेटिंग अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन of the amount of sugar with particular amount of water, right? Okay, so this is regarding the homogeneous mixture. Let us talk about the heterogeneous mixture. So heterogeneous, we can talk about oil and water. When you mix oil and water, तो oil की जो density होती है वो कम होती है, hence it goes and floats on the top of water. Next comes sandy water, salad, right? Okay. So these are the examples of homogeneous as well as heterogeneous mixtures. And what is the basic difference regarding the definitions? Basically होता है composition के basis पे, uniform या फिर non-uniform. Okay, moving on to the next question. The next question says, explain photoelectric effect. Now, photoelectric effect in its own sense is a very, very big topic, but we'll take it in short, right? Now, photoelectric effect की definition क्या है? It is the phenomenon where electrons are ejected from. अब ये जो material है, it is usually a metal. When it is exposed to light of sufficient energy. एनर्जी जो है हमारे रिलेटेड होती है फ्रीक्वेंसी से. ठीक है, वो कैसे रिलेटेड होती है मैं आपको नेक्स्ट आगे चल के बताता हूँ. सो क्या फिनोमिनन है कि एक मटेरियल से आपके इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं जब उसको हमने एक्सपोज किया टू अ लाइट ऑफ सफिशिएंट एनर्जी, दैट इज फ्रीक्वेंसी. नाउ दिस इफेक्ट प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर द क्वांटम नेचर ऑफ लाइट. जो हमारी क्वांटम थ्योरीज थी, क्वांटम थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स का ओरिजिनेशन इधर से ही हुआ है. So it provided the evidence for quantum nature of light, and this led to the development of quantum mechanics, right? As this particular phenomenon led to the development of quantum mechanics. Now Einstein साहब जो थे हमारे, Einstein explained it using the concept कि light जो होती है हमारी, it consists of small small packets of energy, and these various small packets of energy are known as photons, जहाँ पे each photon will have the energy which is given by E is equals to h nu. This is the formula which I was talking about, जो हमारा relation बताएगा between energy as well as frequency, that E is equals to h nu. And what is h here? E is energy, nu is frequency, and h जो है हमारा, h here stands for Planck's constant. Okay,
ये जो h है it is a Planck's constant. So this was basically the photoelectric effect. कि भाई साहब हुआ क्या, हमारा लाइट था से हमारे जो थे वो एड हुए, वो इजेक्ट हुए। एंड ये तभी हुआ हमने एक सफिशिएंट एनर्जी, दैट इज सफिशिएंट, एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम रेडिएट, अगर उसे कम पे करते तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं हो रहे थे, उसे ज्यादा किया तब भी हो रहे थे, बट मिनिमम वैल्यू कुछ तो चाहिए। इसी से हमें पता चला लाइट में पॉकेट्स ऑफ एनर्जी जिन्हें हम फोटॉन्स कहते हैं, और हर एक फोटोन की जो एनर्जी है उस लाइट सोर्स की, वो गवर्न होती है उसके फ्रीक्वेंसी। अच्छा हमारा क्वेश्चन है, right? So the only variable which decides energy is the frequency. Now, more about photoelectric electric effect, we can go into more depths, but I think this is sufficient for knowing just a brief of photoelectric effect. There is an anode, then there is a cathode जो study हुई थी हमारी पूरी, जो स्टडी थी। सपोज आपके 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट है, 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी सोर्स है, राइट? इट केम ऑन द मेटल, देन जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए थे उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी थी, दैट कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड। सो देयर आर many things which can be calculated in those things, right? And it is basically a conceptual thing, and if you want the equations, particular equations change चीज की, so we can work with the equations also। जो आपकी एक इक्वेशन है वो बनती है आपकी E naught is equals to H into V naught, that is, second is kinetic energy is equals to half m v square, C is equals to nu lambda, and one more formula I'll give you, kinetic energy is equals to hc by lambda minus E naught। ये जो hc by lambda है इधर, that is your इंसिडेंट एनर्जी, जो आप जिस एनर्जी से जिस लाइट से आप उसको इरेडिएट कर रहे हैं, एनर्जी ऑफ दैट लाइट, एंड ई नॉट इज योर थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर मैटर, राइट? ओके, so this was regarding the photoelectric effect. Now let us talk about the next out. Next out में basically what was asked is formula making, how to make the formulas for various things। तो इसमें हमारे पास कुछ सब टॉपिक्स है, जैसे valency, valence electron, electronic configuration, metals and non-metals, then proton, electron, neutron, right? Also, we had the equation for balancing the chemical equation. Now, balancing chemical equation will itself take one whole lecture. I can tell you many tips and tricks and shortcuts as well as detailed methods ki how to balance the chemical equation according to NCRT, as well as how to do that in your specific exam in shorter duration of time. So what we will do here is we'll just take a brief of how to balance the chemical equations, right? Okay, coming on to the first one, valency. So valency is the combining capacity of an element, which will be typically related to the number of valence electrons। जितने आपके उस पर्टिकुलर एलिमेंट में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दोज विल बी नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को हम वैलेंसी कहते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, राइट? ओके, so this there is no particular formula as such for the valency,
ऑल यू कैन से इज फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप, एक जो ग्रुप होता है, उस एक ग्रुप में जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उन सभी की वैलेंसी ऑलमोस्ट every time it is same. There are certain exceptions, but almost all the time जो उनकी valency होती है that is same. So that is one formula that I can give you. And across the period अगर आप देखें, so across the period valency initially increases, then after it attains a value and उसके बाद decrease कर जाती है. Initially जो हमारा होता है across the period it will be electron positive, फिर उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने की शक्ति रखते हैं वो, देन आफ्टर दैट इट विल बी electronegative, right? Okay, so this is regarding valency. Now next let us talk about the valence electron. So valence electron, as I said, are nothing but the number of electrons in the outermost shell of an atom, right? So those are known as valence electrons. तो वैलेंसी हो गई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए. लेट अस टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. कोई भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट एलिमेंट, राइट? यू कैन आइडेंटिफाई एन एलिमेंट विद इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज वेल एज आप उसकी जो वैलेंसी है दैट कैन आल्सो बी डिटरमाइंड यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम. फॉर एग्जांपल, लेट अस सी the distribution of electrons in an atom's orbitals. That is the specific definition of EC, that is electronic configuration. एग्जाम्पल हम सल्फर का लेते हैं. सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16. सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, राइट? सो जो p ऑर्बिटल है उसमें देयर विल बी 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर सल्फर. तो ये हो गया वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. Now let us talk about the metals as well as non-metals. So metals को हम metals क्यों बोलते हैं? Because metals will tend to lose electrons and form cations. Whereas जो हमारे non-metals हैं, non-metals tend to gain electrons to form anions. So that is one of the basic difference कि metals हमारे electrons lose करके cations बनाते हैं, non-metals हमारे electrons gain करके anions बनाते हैं, right? Then come the प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्रोटॉन्स की. सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज बेसिकली इक्वल टू द एटॉमिक नंबर. जितना उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे उसमें. ओके, नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें, सो अगर न्यूट्रल एटम में हम बात करते हैं, सो फॉर न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की अगर हम बात करें, हमें प्रोटॉन्स पता चल गए एटॉमिक नंबर से, इलेक्ट्रॉन्स पता चल गए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से इन अ न्यूट्रल एटम. अगर एनायन है तो जितना उसका चार्ज होगा उतना आपको ऐड करना होगा टू द इनिशियल न्यूट्रल वाला जो उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा. एंड अगर कैटायन है तो उतना ही चार्ज, उतना जो नंबर है वो माइनस करना होगा टू द न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन. एंड रिगार्डिंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, neutrons will be determined by mass number minus the atomic number. Okay, right. Let us talk about the last one, which I was saying, the chemical equations. How do you balance the chemical equations? So basically what you do is you have to adjust the coefficients. जो हमारे उसमें मॉलिक्यूल्स हम यूज करते हैं, जो भी कंपाउंड्स यूज करते हैं, उनके कोएफिशिएंट्स को आपको एडजस्ट करना होता है, ताकि ये इंश्योर हो जाए कि जो नंबर ऑफ एटम्स है ऑफ ईच एलिमेंट दैट विल बी इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन. इक्वेशन के दोनों ही साइड पे जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स है हर एक एलिमेंट के, वो इक्वल रहे, राइट? ओके, दिस इज वन थिंग. नेक्स्ट, देयर आर सर्टेन कंडीशंस फॉर यू व्हिच वी हैव टू लुक, कि जब चार्जेस की बातें आती हैं, चार्जेस भी हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंगली. लाइक अगर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है
बेसिक मीडियम में रिएक्शन है, जो भी मीडियम में उसमें रिएक्शन हो रही है, सो यू हैव टू एडजस्ट दी पर्टिकुलर नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर मॉलिक्यूल्स रिगार्डिंग दैट. H plus in the case of acids, OH minus in the case of base. एंड अगर आप H प्लस एक जगह डाल रहे हैं तो दूसरी तरफ आपको H2 मॉलिक्यूल्स डालने पड़ेंगे. So these are the certain conditions, specific special conditions in redox reactions. ऐसे ही there are various methods, various tricks for different types of compounds, different types of reactions. Please let me know in the comment section if you want to know specific for one particular type of reaction, right? Okay. So this was regarding the main eighth doubt, which was formula for various things, formula and tips and tricks for various subtopics. Now let us talk about the ninth one. Ninth is the law of reciprocal proportion. Now, this is nothing but pure theoretical definition, and if you एक बार आप इसको अच्छे से अगर पढ़ते हैं तो you'll be able to answer it well, right? So, what is basically the law of reciprocal proportion? Let us see. Now, this law states that if two elements A and B combine separately with a fixed mass of a third element C, ठीक है, मतलब दो एलिमेंट्स है हमारे पास A एंड B, इन्होंने सेपरेटली कंबाइन किया विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट जो कि था C. देन जो रेशियो है इन विच दे डू सो, इट इज आइदर द सेम या फिर एक सिंपल मल्टीपल होगा ऑफ द रेशियो इन विच A and B combine with each other. Okay, so let us see in a basically simplified way. A and B थे, वो आपस में कंबाइन कर रहे थे, ठीक है. तो अगर ऐसे दो एलिमेंट्स है A एंड B जो एक साथ कंबाइन करते हैं, अब इन्होंने समझ लो एक फिक्स्ड मास हमने ले लिया, सपोज 10 ग्राम. कोई तीसरा एलिमेंट है C, उसके 10 ग्राम के साथ ये रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं. तो जिस रेशियो में वो कंबाइन करेंगे वो कौन सा रेशियो होगा? या तो वो उसी रेशियो में होगा जिसमें A एंड B कंबाइन करते हैं. सपोज ए और बी कंबाइन करते हैं इन द रेशियो ऑफ 2:3, तो या तो वो उसी रेशियो में कंबाइन कर, ओके, या फिर इफ नॉट दिस, देन दे विल कंबाइन इन सच अ रेशियो जो कि एक सिंपल मल्टीपल होगा 2:3 का, या तो 4:6 हो सकता है, राइट, या तो इट कैन बी 3:9. सो इस रेशियो में एक दूसरे से कंबाइन करेंगे. ये है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, कि ए और बी अगर आपस में कर रहे हैं तो ए एंड सी हो गया, या फिर बी अगर सी के साथ करेगा तो वो भी उसी हिसाब से रिएक्ट करेगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल. जो हम इनवर्स चीजें लिखते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, दैट इज बेसिकली जस्ट द मैथमेटिकल टर्म उस चीज को एक्सप्रेस करना है, राइट. सो दिस वाज द नाइन्थ क्वेश्चन व्हिच वाज रिगार्डिंग लॉ ऑफ reciprocal proportion. Now let us talk about the 10th one. 10th doubt or the 10th question that was asked, this was regarding the Lucas test reagent. Okay, so let us see the Lucas test reagent. A test to differentiate between primary, secondary, and tertiary alcohols using zinc chloride in concentrated hydrochloric acid. That is basically the Lucas test reagent. आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, इसका सपोज एक मिक्सचर है. उस मिक्सचर को आपको उस मिक्सचर को आपको डिफरेंशिएट करना है इन तीनों कंपाउंड्स में यूजिंग जिंक क्लोराइड. एंड ये जो रिएक्शन होगी हमारी कंसंट्रेटेड HCl में होगी. सो दैट इज नोन एज योर लूकस टेस्ट रिएजेंट. तो टर्शरी अल्कोहल्स की अगर हम बात करें, तो टर्शरी अल्कोहल्स
react immediately. Secondary alcohols will react slowly. And जो हमारे primary alcohols होंगे, they will do not react at room temperature. So this is how you differentiate. आपने A, B, C compounds ले लिए, एक mixture बनाया. You don't know what is A, B and C. On the basis of speed of reaction, आप differentiate कर सकते हैं कि ये tertiary है या फिर secondary है या फिर primary, right? So that is the main purpose of Lucas test reagent. Now let's go on to the next one, that is the Williamson synthesis. What do you mean by Williamson synthesis? So in Williamson synthesis, basically, it is just a method to prepare ethers by reacting an alkoxide ion with a primary alkyl halide. Right. So we wanted to prepare ethers. In the previous reaction, what we did was we differentiated the different types of alcohols, primary, secondary, tertiary, using zinc chloride in a concentrated. Now in this reaction, what we did was we prepared the ethers. और उसके लिए हमने क्या किया, एक जो एल्कोक्साइड आयन था हमारा, उसको हमने रिएक्ट करा दिया प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के साथ. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इट इज रिएक्शन विथ फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड. कोई भी एक फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ जो रिएक्शंस होती है वो कैसे मूव ऑन फॉरवर्ड करती है. सो रिगार्डिंग दैट, alcohols, let us take the examples of alcohols. So alcohols will react with px3. px3 means x is here is halogen atom, कोई भी halogen atom, pcl3, pbr3, right? So alcohols react with px3 to form alkyl halides. So the main product in this reaction is alkyl halides. Note this. Oh, okay, let us move on to the next one. Next one is hydrogen bonding. Now, hydrogen bonding is itself a very big and very interesting topic which affects many dynamics of many reactions. So, talking about just the definition, particular overview of hydrogen bonding, an attraction between a hydrogen atom which is covalently bonded to a more electronegative atom. मतलब एक हाइड्रोजन एटम है, वो एक उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड है. अब ये जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, that can be your oxygen as well as nitrogen या फिर any other atom as a matter of fact. तो ये हाइड्रोजन एटम एंड अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसके बीच में जो आपका अट्रैक्शन रहेगा, जो बॉन्डिंग इंटरेक्शन रहेगा, दैट इज नोन एज योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ओके, so we talked about Lucas test reagent for alcohols, then we talked about Williamson synthesis to prepare ethers, फिर हमने बात करी रिएक्शन विथ फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड, and then we talked about the hydrogen bonding. Okay, right. Now, moving on forward, we have to talk about the glucose. And in glucose specifically, हमें बात करनी है how to calculate the number of molecules of glucose. Okay, तो चलिए ना, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, right? So this is the formula of glucose, C6H12O6. एक सैंपल में अगर हमें कैलकुलेट करने हैं द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, we will be using the Avogadro's number. We know the formula for number of moles of a particular compound.
the number of moles है that is given by small n is equals to number of molecules of a given compound divided by Avogadro's number. Avogadro's number क्या होता है? 6.022 into 10 to the power 23 molecules per mole. That is your Avogadro's number. सिंपली हम क्या करेंगे, ग्लूकोज का अगर हमें पता करना है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. A is equals to n into A नॉट. n यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज एंड ए नॉट इज एवोगाड्रोस नंबर. नाउ ये जो नंबर ऑफ मोल्स है ये आपको या तो डायरेक्टली क्वेश्चन में दे दिया जाएगा या फिर यू हैव टू कैलकुलेट इट ड्यूरिंग विद द हेल्प ऑफ अ डिफरेंट फॉर्मूला. फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ मोल्स का अलग फॉर्मूला क्या होता है आपका? इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द sample divided by molecular mass, right? Molecular mass we can calculate C into 6 H into 12 O into 6 इन तीनों को ऐड करके, right? So if the amount is given in grams, पहले हम उसे moles में convert करेंगे by dividing the molar mass. And the molar mass of glucose, you have to remember it, like you can calculate, but after calculation you'll get it. And just for saving time in questions in the exams, you remember it is molar mass of glucose is 180 grams per mole, right? Okay, right. So this was regarding glucose, how to calculate the number of molecules. Coming on to next question. Now, next question is what is mole concept? See, there is a whole chapter in your NCERT chemistry on the basis of mole concept, right? If I have to just say define, ऐसे किसी को बताना है layman को कि mole concept क्या होता है? So mole concept is nothing but a method in chemistry to quantify the amount of a substance. एक particular substance है आपके पास, उस substance का आपको amount बताना है. हम जैसे मेजर कर रहे थे वैसे अमाउंट बताना है कि कितना है वो सब्सटेंस हमारे पास. सो उस चीज को बताने के लिए जो हम कंसेप्ट का यूज करते हैं दैट इज नोन एज मोल कॉन्सेप्ट. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वन मोल? लेट अस से वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स एग्जैक्टली 6.022 into 10 to the power 23 particles. अब ये जो नंबर है, what is this number? I just told you 6.022 into 10 to the power 23. This is known as Avogadro's number. So कोई भी सब्सटेंस का एक मोल अगर आपके पास है मतलब आपके पास उस सब्सटेंस के उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के कितने पार्टिकल्स हैं? एग्जैक्टली 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स हैं आपके पास, राइट? ओके, सो दिस इज वन मोल. नेक्स्ट वी हैव इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन मोल कॉन्सेप्ट. तो जो आपका मोल कॉन्सेप्ट वाला स्पेसिफिक सेक्शन है या फिर चैप्टर है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं? सो सी विथ मी. फर्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स आर गिवन बाय गिवन मास अपॉन मोलर मास. ये मैंने अभी बताया आपको. गिवन मास आपको लेना है ग्राम्स में, मोलर मास आपने लेना है ग्राम्स पर मोल में. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला. लेट्स सी द सेकंड फॉर्मूला. सेकंड फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स. नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन बाय moles into 6.022 into 10 to the power 23, right? So this was regarding the number of particles. Let us talk about the third part. Third part says molarity. What is molarity? Molarity is equals to moles of solute, number of moles of solute upon volume of the solution in liters. तो ये एक अलग आ गया थोड़ा. moles of the solute upon volume of the solution in liters. Okay, let us talk about molality. मोलारिटी को हम डिफाइन करते हैं कैपिटल एम से, मोलालिटी को हम डिफाइन करते हैं बाय स्मॉल एम, राइट? मोलालिटी में जैसे कि इधर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स था वैसे ही उधर वेट जो रहेगा वेट वाला पैरामीटर आ जाएगा उसमें. ओके, राइट. सो दिस वाज रिगार्डिंग मोल कॉन्सेप्ट कि मोल कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है.
and what are the important formulae in mole concept. Let us talk about the next thing. Next we have is diazotization reaction. The doubt which was asked is, what do you mean by diazotization reaction? Now, first let us see the definition. Diazotization is the process of converting a primary aromatic amine. अब ये जो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है, इसका आप एग्जांपल ले लिए जैसे कि एनिलीन, तो इससे हमें कन्वर्ट करना है इनटू अ डायazonium salt using nitrous acid. Nitrous acid as in HNO2 and hydrochloric acid at low temperatures. Low temperatures means 0 to 5 degrees Celsius. So what will be the reaction? कि आपने एक प्राइमरी एरोमेटिक अमीन आपके पास था, एग्जांपल एनिलीन, उसे आपने एक डायज़ोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट किया, लेकिन इस प्रोसेस के लिए आपके पास कौन दो कैटलिस्ट या फिर कौन से दो एडिशनल रिएक्टेंट्स थे? सो यू हैड वन नाइट्रस एसिड एंड द अदर वन वाज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड ये रिएक्शन बहुत स्पेसिफिकली आपके सिर्फ लो टेम्परेचर्स पे होगी। इसी स्टेटमेंट का हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं। सो C6H5NH2, C6H5NH2, this is a primary amine. Okay, let us make the formula, let us make the structure for this. ये हमारा रहा बेंजीन कंपाउंड। ओके, इसके एक हाइड्रोजन एटम को हमने रिप्लेस कर दिया बाय NH2, सो ये हमारा बन गया प्राइमरी अमीन। इसने रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ HNO2, देन इसने रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, एंड इसने हमें क्या दिया? इसने हमें एक दिया डायazonium सॉल्ट। अब ये जो डायazonium सॉल्ट था, दिस पर्टिकुलर वन, इसका फॉर्मूला है C6H5N2 plus Cl minus, right? Means how is it? Look here, ये हमारा जो कंपाउंड था प्राइमरी अमीन, इधर में नाइट्रोजन था तो H2 हट गया, तो ये बन गया हमारा N2 plus Cl minus। जो हमारा नाइट्रस एसिड था HNO2, उसका एक आपका नाइट्रोजन आके इट केम विथ योर प्राइमरी कंपाउंड, राइट? सो ये जो N2 और एक नाइट्रोजन आया, दिस केम फ्रॉम HNO2। ओके, राइट। सो दिस वाज द diazotization reaction. Now, next we have our last doubt. The last doubt is, explain why secondary amine is more basic than primary amines. ठीक, secondary amines जो हमारे पास होते हैं वो ज्यादा बेसिक क्यों होते हैं compared to primary amines? Now, secondary amines we know कि उनका जो structural formula होगा that will be ammonia जो है, we have N राइट। सो सपोज कि अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है, अमोनिया के मॉलिक्यूल में से मैंने एक हाइड्रोजन हटा के आई रिप्लेस्ड इट विद एन एल्काइल ग्रुप, सो दैट विल बी नोन एज ए प्राइमरी अमीन। इन अनदर केस मैंने अमोनिया का दो हाइड्रोजन एटम हटा दिया एंड आई रिप्लेस्ड दोस टू प्लेसेस विद टू एल्काइल ग्रुप्स, दैट इज R2NH, दैट इज नोन एज ए सेकेंडरी अमीन। ओके, सो ये हो गए हमारे बेसिक डेफिनेशन की प्राइमरी अमीन्स क्या होते हैं, सेकेंडरी अमीन्स क्या होते हैं। नाउ दे आर मोर बेसिक बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट। जो हमारे दो एल्काइल ग्रुप्स हैं, एल्काइल ग्रुप्स आर हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन,
इनके पास होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट। उसी वजह से जो हमारा क्या होता है, जो नाइट्रोजन एटम है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट इंक्रीजेस, ओके, मेकिंग इट मोर प्रोन टू एक्सेप्ट प्रोटॉन्स। एंड हमें बेसिसिटी कोई भी जो एटम की होती है, वी नो कि जो भी ज्यादा प्रोन होगा टू एक्सेप्ट प्रोटॉन्स दैट विल बी मोर बेसिक। सो उससे हमें पता चलता है कि सेकेंडरी अमीन्स जो है इसी वजह से वो ज्यादा बेसिक होते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट आएगा एल्काइल ग्रुप्स का, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिटी आपकी बढ़ती जाएगी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी नाइट्रोजन एटम पे, उतना वो ज्यादा प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। जितना ज्यादा उसकी टेंडेंसी होगी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन्स, उतना ही उसका बेसिक कैरेक्टर होते जाएगा, राइट। सो दिस इज द मेन रीजन। नाउ और एक इफेक्ट क्या है, additionally the secondary amines are better stabilized by the plus I effect of two alkyl groups compared to one in primary amines। प्राइमरी अमीन्स में सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप होता है, तो उसका जो प्लस आई इफेक्ट है वो कम होगा। सेकेंडरी अमीन्स में आपके दो अल्काइल ग्रुप्स रहेंगे, तो उनका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। तो जो सेकेंडरी अमीन्स होते हैं दे आर मोर स्टेबलाइज्ड बाय, आई मीन दे आर बेटर स्टेबलाइज्ड बाय द प्लस आई इफेक्ट इन केस ऑफ सेकेंडरी अमीन्स। हेंस वो ज्यादा स्टेबल रहेंगे एंड हेंस वो आपके ज्यादा बेसिक नेचर जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। सो दिस वाज रिगार्डिंग secondary amines and primary amines and the basic character involving those. So let us see. First of all, we talked about secondary and primary amines. जो हम recall अगर करें, secondary and primary amines हमने देखे हैं, उनका basic nature देखा. Then we talked about diazotization reactions, right? The primary aromatic amine, diazonium salt, what are the catalysts, then mole concept and what are the important formulas in mole concept. फिर हमने बात करी थी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। Then what we talked about was various terms like Lucas test reagent, Williamson synthesis, phosphorus trihalide के साथ reaction, reaction with hydrogen bond, hydrogen bonding, right? फिर हमने देखा law of reciprocal proportions. Then we talked about various formula making for valency, valence electron, electronic configuration, metals and non-metals, फिर proton, electron, neutron, then how will we be balancing the chemical equation। फिर हमने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है क्या होता है इन जस्ट अ स्मॉल नटशेल, व्हाट डू यू मीन बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देन हमने देखा कि मिक्सचर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मिक्सचर एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ मिक्सचर, व्हाट आर द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर, राइट। Then we talked about electronegativity. Electronegativity का definition. What are the trends in periodic table? Across a period क्या होता है? Down the group क्या होता है? Polar covalent bonds में कैसे आपका bonding effect होगा? Ionic bond में कैसा होगा? Bond strength को किस तरह से affect करेगा? Then we talked about the basic definition as we said, and the coupling reactions for phenols. तो phenol हमारे ग्रुप थे aromatic compounds, उनकी coupling reactions कैसे होती हैं, right? How do we get a colored azo कौन से medium में reaction होती है, what is the byproduct? So all this we talked about in today's session. I hope this session was useful to you guys, and all the best to you. Keep on hustling, keep on giving your best of work, and all the best. Thank you.